Hello student, hope you all are good. Now let's start our next topic, which is heterotrophic mode of nutrition. Okay, so what do we mean by hetero? Hetero means others, okay, and troph means nutrition. Okay, so what happened that they depend on other for their food, like animal, human. Okay, we all are dependent on plant for our food. Okay, so अब देखिए हम लोग ऑटोट्रॉफ्स में क्या देखे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाइक प्लांट यूटिलाइज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज. ओके, तो वो लोग अपना फूड जो है वो खुद बना रहे थे ग्लूकोज फॉर्म में एंड द स्टोर्ड फॉर्म इज व्हाट स्टार्च. ओके, नाउ वी आर हियर to know that heterotrophs are dependent on other for their food. Okay, we modify food in tastier form. Okay, आप बोलेंगे कि खाना हम लोग भी बनाते हैं किचन में, ठीक है, लेकिन हम लोग जो खाना बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है प्लांट से. ओके, सो रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. So definition is the mode of nutrition in which organism can't make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food is called heterotrophic nutrition. Okay, so the mode of nutrition in which what happen, organism can't make their own food, वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, यूटिलाइज नहीं कर सकते इन ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए. कहाँ? ऑर्गेनिक मटेरियल्स में. और वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, those organisms which can't make their own food, okay, from an organic substance like carbon dioxide and water depend on other organisms for their foods are called heterotrophs. Okay, तो heterotrophs किसको बोले? जो खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे for food. Okay, so those organisms depend on autotroph for their nutritional requirement. ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. ठीक है, सो एग्जांपल इज एनिमल व्हिच ईट्स प्लांट एज देयर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. ओके, हर्बीवोर्स किसको कहते हैं हम? जो एनिमल सिर्फ प्लांट ही कंज्यूम करता है. ठीक है, और जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स. एनिमल विच ईट अदर एनिमल एज देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ठीक है, और जो बोथ ही जो प्लांट और एनिमल दोनों कंज्यूम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स. ओके, now depending on the mode of nutrition or way of taking the nutrition, okay, these are divided into heterotrophic mode of nutrition is divided into three parts. And what is that? First is saprophytic, okay, next is parasitic, and third one is holozoic mode of nutrition. These are the three types of heterotrophic nutrition. Okay, Holozoic, Saprophytic and Parasitic. Okay, so now we move to next slide. See, these are example of what? Heterotrophs. Okay, this is, so they depend on others for food. Now type of heterotrophic nutrition. Okay, so the heterotrophic organisms can obtain its food from other organisms in three ways: saprophytic, parasitic and holozoic. Okay, now next we will see what do we mean by saprophytic nutrition. Okay, sapro means dead or rotten. Okay, which is dead or rotten. So mode wherein organism feed on dead and decomposed matter. So organism obtain its food from dead and decomposed matter. Example, fungi. They feed on dead and decomposed
मैटर, ठीक है। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे फीड करता है, तो डेड एंड डिकम्पोज मैटर, डेड मरा हुआ प्लांट या फिर डेड एनिमल्स, ओके। So saprophytic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants and dead animals and rotten bread, etc. Okay, so किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, ओके। So saprophytes are organisms which obtain their food from dead plants like rotten bread. Rotten bread, you know, if you will leave bread, if you will leave bread for 2 or 3 days on your table, you will see that it will rotten, ओके, तो सड़ जाएगा। क्या होगा उसमें जो है, आप देखेंगे अगर आप ब्रेड को छोड़ देते हैं 2-3 दिन बाहर टेबल पे, ठीक है, विदाउट रेफ्रिजरेटर, ओके, सो यू विल सी व्हाट कि वो क्या हो जाता है, रॉटन, मतलब वो सड़ जाता है, ठीक है। उस पर कौन फीड करता है, सो फंजाई विल फीड अपॉन इट, फंजाई नेम इज राइजोपस, ओके। So fungi will feed upon the rotten bread. Okay. Many more fungi is mushroom yeast. Okay. So this is saprophytic nutrition. ये clear है आपको? ये देखिए एग्जाम्पल है saprophytic organism. Okay. We are seeing here mushrooms. Okay. Now we come to next mode of nutrition, which is parasitic. Okay. So some organisms live inside the body of the other organism and obtain food from that organism. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, वो जो है वो दूसरे बॉडी पे सरवाइव करते हैं और वहां से अपना फूड लेते हैं, ओके। इसमें इसका एग्जाम्पल आप देखें, इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट यू हैव हर्ड दैट मेनी पीपल हैव worms inside their stomach, so they got some stomach infection because of presence of some worms, okay। आप सुने होंगे ना कि स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, वॉर्म है, ऐसा आप सुने होंगे। सो व्हाट आर दीज वॉर्म, वॉर्म आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इनसाइड आवर बॉडी एंड दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम आवर बॉडी, so they are also heterotrophic, but in order to get their food they are living inside the another organism body, okay, so they are known as parasitic, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वो वॉर्म्स जो है वो कहाँ रहते हैं, स्टमक में रहते हैं, वो हमारे स्टमक से फूड लेते हैं, ओके, फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ओके। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि आप मलेरियल पैरासाइट ना, प्लाज्मोडियम, you have listened, okay, that malarial parasite is also, they obtain also food in mode of parasitic nutrition, ठीक है। वो क्या करते हैं, फीमेल एनोफिलिस बाइट करते हैं हेल्दी पर्सन को, ओके, एंड द प्लाज्मोडियम survive, feed upon our blood. So definition is, the parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its nutrition from the body of another living organism, call it host without killing it, okay। तो वो वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करता है, फीड करता है, ठीक है। उसको जिसपे वो सरवाइव करता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, विदाउट किलिंग इट, ओके। सो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, plant or animal, whatever, okay, which feeds on another living organism called host, ठीक है। किसको होस्ट बोले, जो पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो प्लांट पे सरवाइव करेगा, फीड करेगा, या तो एनिमल पे फीड करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ओके। एंड द एग्जाम्पल इज व्हाट, एग्जाम्पल इज आई हैव गिवन यू ऑलरेडी, लीच which live in our hair, it is called ectoparasite, okay। Ectoparasite means what, which lives outside our body, ecto means bahar, outside, okay, outside our body is called ectoparasite, while ascaris is endoparasite, okay। We are talking about that worm stomach infection,
दैट इज स्कैरिस. तो वो कहाँ रहते हैं? एंडोपैरासाइट, मतलब हमारे बॉडी के इनसाइड रहते हैं. दैट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट विच लिव आउटसाइड द बॉडी, एंडोपैरासाइट विच लिव इनसाइड आवर बॉडी. ओके. नेक्स्ट parasitic plant example is cascata or amarvel. Okay. See, this is example of parasite. These are parasite. These are worms. Okay. Now we come to our next mode of nutrition, which is Holozoic mode of nutrition. Okay, Holozoic mode of nutrition. So Holozoic means intake of organic complex matter as food. That means there are some organisms which take complex food. Example, human beings. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन? दैट वी डाइजेस्ट इट, देन आवर बॉडी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड एंड वी गेट एनर्जी. ओके. So what happened? That what do we eat? We eat things like rice, bread or meat. ये सब तो हम खाते हैं, राइस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं ना. So these all are, ये सारे क्या है? Complex food है. Okay. I mean that we don't take glucose at food. Okay, glucose is something which is very simple, but now those simple things combine together to form complex things, and we take those complex things as a food. अब हम लोग ग्लूकोज तो ही नहीं लेते हैं ना, हम लोग क्या लेते हैं? दैट कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं हम लोग. ओके. एग्जाम्पल, राइस, एज आई हैड सेड बिफोर. ओके. So what happens is that, like, we consume rice, right? So cell inside our body can't directly utilize it for energy. Okay. Rice, since it is a complex matter, it had to be broken down into the simpler form. ओके. जब तक वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, है ना, तो हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. जैसे सिंपलर फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है. ओके. ग्लूकोज विच मेक द कार्बोहाइड्रेट. ओके. ग्लूकोज विच मेक द कार्बोहाइड्रेट. ओके. एंड similarly, protein, when we talk about that, basic unit of protein is amino acid. Okay, amino acids. And similarly, fats are again formed by fatty acids. They are formed by fatty acids. Okay. So the Holozoic nutrition is that nutrition in which organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. Okay. तो क्या होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं एंड आफ्टर इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ द फूड, हम लोग जैसे ही फूड को ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है? वो डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट मीन्स breakdown of complex substance into the simpler one. ठीक है. जिससे हम लोग राइस लेते हैं, we can't directly utilize it, so rice is broken down into their simpler form, that is carbohydrate, that is glucose. Okay. And then our body cells absorb it. Okay. Example is man, cat, dog, deer, tiger, frog, fish and amoeba, etc. They all take complex food. They all are Holozoic. Okay. They all are Holozoic. So next, see, dog, okay, bear, these all are what? All animals have the Holozoic mode of nutrition. Now we talk about in our next class we will talk about nutrition in animal. Okay, what is nutrition in animal? So I would like to conclude it. Okay, like Holozoic animal, because in the Holozoic group also we have variety of animal. It is not only the human being. Most of the animal which we see around us, they are mostly Holozoic. जो भी हम लोग आसपास देखते हैं वो सारे क्या हैं? Holozoic हैं. That they intake the complex organic matter as the food. So as I had said before, I want to conclude it. Okay, we have three types. Like, what are the three types? Herbivores, carnivores and omnivores.
हम लोग ने पहले ही कहा, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स मीन्स the organism, okay, or the animal which feed on plant, like example cow, horse, rabbit, okay, they all depend upon plants for their food, okay. And next is our carnivores, okay. So carnivores means those organisms which feed on flesh, like lion, tiger, okay. And next is omnivores. Omnivores means what? Those who can consume both, okay, those who feed upon both plant and animal, human, crow, pig, rat, okay. So what we conclude that all heterotrophs depend on autotrophs directly or indirectly. हम लोग यही देखें अभी तक, इसका कंक्लूजन क्या है, हम लोग यही देखें कि हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो डिपेंड करते हैं किस पे? ऑटोट्रॉफ्स पे। डायरेक्टली डिपेंड करें या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करें, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट nutrition or heterotrophic mode of nutrition, okay. Now in next class we will see nutrition in animal, okay. So thank you. हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए EseUp का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। EseUp के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।